मुश्किलें तो जारी है पर हौसले भी तो भारी है, कुछ कर दिखाने की अब अपनी बारी है। मुश्किलें तो जारी है पर हौसले भी तो भारी है, कुछ कर दिखाने की अब अपनी बारी है। It's PPL, Patan Premier League. It's PPL, Patan Premier League. यही तो जज्बा है, हमें खेल में लड़ना है, चाहे लड़ ले जितना भी हमें संग रहना है। यूं तो है जुदा जुदा एक ताकत बनना है, हम हैं एक पंजे के एक मुट्ठी बनना है। Let's do it, let's hit it, let's play fair all the way. It's PPL, let's win it, let's beat it, let's play fair all the way. It's PPL. PPL's here, I wanna go. PPL's here, let everybody know. PPL's here to put on a big show. PPL's here, I really wanna go. With your support, we have made it this far. With the grace of the partners, हो गया ये बेड़ा पार. Talent वालों कर लो अपने सपने साकार. जो भी मिला मौका कर लो सीधा बाउंड्री के पार. Togetherness and unity is अपरंपार. ये है मौका to be a shining star. आओ देखो पाटन वाले, आओ देखो संसार. हमारा कमाल और crowd की जयकार. Let's do it, let's hit it, let's beat it, let's win it. Every catch, every six has a passion within it. It's that time of the year, it's where you wanna be. It's the Patan Premier League. What else you gonna see? मैदान में चलती है स्लेजिंग और गाली भी, पर जोश जगाती है वो गूंजे ताली की। मैदान में चलती है मस्ती स्लेजिंग और गाली भी, पर जोश जगाती रग रग में वो गूंजे ताली की। जी जान लड़ा देंगे चाहे खून पसीना हो, हम जीत के आएंगे ये 84 ना हो। Let's hit it, let's beat it, let's play fair all the way. It's PPL, let's do it, let's win it. It's PPL. It's PPL. Hit it, beat it, do it, let's win it. It's PPL. मुश्किलें तो जारी हैं पर हौसले भी तो भारी है, कुछ कर दिखाने की अब अपनी बारी है। मुश्किलें तो जारी है पर हौसले भी तो भारी है, कुछ कर दिखाने की अब अपनी बारी है। मुश्किलें तो जारी है पर हौसले भी तो भारी है, कुछ कर दिखाने की अब अपनी बारी है। It's PPL, Patan Premier League. It's PPL, Patan Premier League. यही तो जज्बा है, हमें खेल में लड़ना है, चाहे लड़ ले जितना भी हमें संग रहना है। यूं तो है जुदा जुदा एक ताकत बनना है, हम हैं एक पंजे के एक मुट्ठी बनना है।
Let's do it, let's hit it, let's play fair all the way. It's PPL. Let's win it, let's beat it, let's play fair all the way. It's PPL. PPL's here, I wanna go. PPL's here, let everybody know. PPL's here to put on a big show. PPL's here, I really wanna go. With your support, we have made it this far. With the grace of the partners, हो गया ये बेड़ा पार. Talent वालों कर लो अपने सपने साकार. जो भी मिला मौका कर लो सीधा boundary के पार. Togetherness and unity is अपरंपार. ये है मौका to be a shining star. आओ देखो पाटन वाले, आओ देखो संसार. हमारा कमाल और crowd की जयकार. Let's do it, let's hit it, let's beat it, let's win it. Every catch, every six has a passion within it. It's that time of the year, it's where you wanna be. It's the Patan Premier League. What else you gonna see? मैदान में चलती है स्लेजिंग और गाली भी, पर जोश जगाती है वो गूंजे ताली की. मैदान में चलती है मस्ती स्लेजिंग और गाली भी, पर जोश जगाती रग रग में वो गूंजे ताली की. जी जान लड़ा देंगे चाहे खून पसीना हो, हम जीत के आएंगे ये 84 ना हो. Let's hit it, let's beat it. सौरभ ऑडिओचा कन्फर्मेशन दे. सौरभ, संदीप, मला मला कन्फर्मेशन दे. आवाज येतोय का माझा? संदीप, हॅलो. Good morning, friends, and welcome to Green Shah presents a Patan Premier League Season 5, and we are getting ready for the first match of the day to be played between Blasters led by Suchit Jairaj Shah and PHYSIONISH Smashers led by Bhavik Shah. We have the august presence of Shri Jairaj Bhai Shah, proud father of Ambish Shah and Suchit Shah, as a guest with us. We have got young Vihan, who always thinks cricket and dreams cricket. We have got umpire Prathamesh Angne and Ambarish Naik with us. And from Patan organizing committee, we have got Asit Bhai Shah with us. So we are going to do the toss ceremony as Jairaj Bhai is our guest of the morning. Heads is the call. Tails. So that's great. Suchit, first of all, congratulations on winning the toss, and also congratulations on the last match that you played here. What is your decision and why? We've always looked forward to field first. The reason being the same, we are a batting heavy side, and finally, I think our boys are clicking. There's a great pep in the team, and all the boys are on a high, and they just want to go and win it. So we are thinking about chasing the target again, and that is where we are most comfortable. Any changes in the winning combination? No change in the winning combination. The same team. Last time when these two teams played on 9th of January, you guys chased down 117 and won by 6 wickets. So you would want to continue that dream run against PHYSIONISH? Yes, why not? We have to field well, we have to bowl well, and chase down any target that they put on board. And you know what? I'm so proud to see 3 generations of Shah family: Jairaj Bhai Shah, and then Suchit Jairaj Shah, and then young Vihan Suchit Shah. How special is today is doing the toss ceremony? Mother is sitting there. How are you feeling as a cricketer and as a proud son?
It is very, very special because I remember the days when we were in school and when we were like, in our just under 15, and my parents used to come with us and they used to take us for cricket everywhere. And today, like, we are all together and we are playing. I'm happy that Vihan is also following the legacy right now. I don't know where he'll go from now, but I just wish him all the best. Thank you so much. So you can start your fielding preparations. Bhavik, if you could join me, please. What a dream performance in last match by you and your entire team. You guys rose like a phoenix bird from ashes, and you are taking on Turf Blasters today. You know that this is a must-win game. What decision you would have taken? It's good that we are batting first. We batted in the last match also. The spirits are high, so we will continue like that only. And we have a good bowling side also, so it's good to bowl second and restrict whatever target we have on the ball. Any changes in the team? Viral is coming in instead of Josh. Great. And last time you missed out on winning against Turf Blasters. So today is the time to settle the score on the ledger account. So how are you looking forward to play this match? We'll try to keep it simple. We'll try to keep the basics clear, and we'll take it from there. So thank you so much. You can start your batting preparations. So guys, the news from the middle is Turf Blasters have won the toss. They will be fielding first. They have invited PHYSIONISH smashers to go ahead and bat first. The game comes live to you in a short while from now. Don't go anywhere. Keep watching. Saurin Shah presents Patan Premier League Season 5. Thank you. Thank you, Jaraj Bhai. मातृभूमि तारी कृपाति श्रद्धा न स्वर गूंजाया पूर्वावस्था तारा स्मरणों सूर बनी ने छलकाया मातृभूमि तारी कृपाति श्रद्धा न स्वर गूंजाया पूर्वावस्था तारा स्मरणों सूर बनी ने छलकाया टन 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 टनाटन पाटन गरवी गुजरात નું આ પાટણ મારું ગૌરવ વતન મારું પાટણ ટન 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 ટનાટન પાટણ ધરતી આ ગુજરાતની મારા દેશનું અભિમાન છે धरती आ गुजरातनी मारा देशનું અભિમાન છે રાણીની આ વાવડી મારા દેશનું સન્માન છે રાણીની આ વાવડી મારા દેશનું સન્માન છે આ વસુંધરાની યાનથી ઉઠે છે મસ્તક માનથી સૌ કોઈ બોલો શાનથી હું પત્ની છું હું પાટણનો પત્ની છું પત્ની છું નગરી રાજા સિદ્ધરાજની અણહિલપુર એનું નામ છે જગની રાજા સિદ્ધરાજની અણહિલપુર એનું નામ છે પંચાસરા ને શામળાજી માં તીર્થોનું આ ધામ છે
नीचे मस्तक मान थी, सब कोई बोलो शान थी। हूँ पत्नी छू, हूँ पाटणनो, पत्नी छू, हूँ पत्नी छू। हेमचंद्राचार्य ज्ञानपीठ जैन ग्रंथोनो भंडार छे। हेमचंद्राचार्य ज्ञानपीठ जैन ग्रंथोनो भंडार छे। માં સરસ્વતીનો વાસ અહીં આ વિદ્યાધરોનો દ્વાર છે। માં સરસ્વતીનો વાસ અહીં આ વિદ્યાધરોનો દ્વાર છે। આ વસુંધરાની આન थी, ઉઠે છે મસ્તક માનથી, सब कोई बोलो शान थी। હું પત્ની છું, હું પાટણનો પત્ની છું, હું પત્ની છું। ટન ટન ટનાટન પાટણ, ગરવી ગુજરાતનું આ પાટણ। टन 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 टनाटन पाटण, मारू गौरव वतन मारू पाटण। दूर भले छू ताराथी पण देश प्रेम ना जा। माटीनी खुशबू तारी केम करी विसरा। दूर भले छू ताराथी पण देश प्रेम ना जाय। माटीनी खुशबू तारी केम करी विसरा। સૂની શેરીને ગલીઓમાં મારું શૈશવ ડોકાર, નસ નસમાં વહેતી યાદોથી મારું હૃદયું ભીંજાય। पापा पगले उड़ता शीख्यो शे संस्कारों ने जा। ઘડતર મારો ત્યાં જડમૂળોનો ઋણ કદી ન ચૂકવાય। तारी आन मान ने शान नी रक्षा मारी फरज थई जा। તન મન ધન તુજને સમર્પણ, આ લક્ષ્ય હવે પ્રણ બની જાય। પાટણના પટોળા દેશ વિદેશમાં પણ વખણાય। સાલમ પાક ને દેવડાનો સ્વાદ કદી ના જાય। ઝીણા મીઠા લીલ વાતો કેમ કરી વિસરાય। એ ખટ્ટા મીઠા ગોળાની ચુસ્કી ક્યારે ન ભૂલાય। હર શ્વાસમાં તારો વાસ છે, અંતરનો વિશ્વાસ છે, પળ પળનો અહેસાસ છે। હું પત્ની છું, હું પાટણનો પત્ની છું, પત્ની છું, હું પત્ની છું, હું પાટણનો પત્ની છું, પત્ની છું, હું પત્ની છું, હું પાટણનો પત્ની છું, પત્ની છું।
I like my things personalized. Here's how I do it. It's that easy. मातृभूमि तारी कृपा की श्रद्धा न स्वर गूंजाया ऊर्मवस्था तारा स्मरणो सूर बनी ने छलकाया मातृभूमि तारी कृपा की श्रद्धा न स्वर गूंजाया ऊर्मवस्था तारा स्मरणो सूर बनी ने छलकाया टन 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 टनाटन पाटन गरवी गुजरात नुआ पाटन मारू गौरव वतन मारू पाटन टन 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 टनाटन पाटन धरती आ गुजरात नी मारा देश नु अभिमान छे धरती आ गुजरात नी मारा देश नु अभिमान छे कोई बोलो शान थी હું પત્ની છું હું પાટણનો પત્ની છું હું પત્ની છું नगरी राजा सिद्ध
नीचे मस्तक मौन थी, सब कोई बोलो शान थी। हूँ पटनी छू, हूँ पाटण नो, पटनी छू, हूँ पटनी छू। हेमचंद्राचार्य ज्ञानपीठ जैन ग्रंथोनो भंडार छे। हेमचंद्राचार्य ज्ञानपीठ जैन ग्रंथोनो भंडार छे। माँ सरस्वती નો વાસ હે આ વિદ્યાધરોનો દ્વાર છે। माँ सरस्वतीनो वास અહીં આ Good morning, everyone, and welcome to Saurin Shah Presents Patan Premier League Season 5. As you see, beautiful graphics, PHYSIONISH smash taking on Turf Blasters, match number 25. Turf Blasters won the toss and invited PHYSIONISH smashers to bat first. This is a important stage of the tournament where two games are left apiece for all the 6 teams, and this is the squad. PHYSIONISH smashers led by Bhavik Shah. They've got the entire squad on your monitor, and then they've got Minesh Niranjan Shah, Nilay Zaveri, Nirbhit Shah, Nirvan Shah, Puneet Shah, Samir P. Shah, Viral Hemant Shah, Agam Shah, Jash Salvi, and then they've got Nilay Dinesh Shah, Rushabh Shah, and Sahil Shah. So these are all the names that are on your monitor. As a Turf Blasters, of course, led by Suchit Jairaj Shah. Then they've got Manish Shah, Manik Shah, Maulik Shah, Nirav Mahendra Shah, Smit Hiten Shah, Suchit Shah, Suchit Jairaj Shah, the skipper, Vilesh Mangesh Salvi, and then Vinay Shah, Arav Shah, and so on. We are thankful to our title sponsor, Shri Saurin Bhai Shah, for his support. Special thanks to Shri Patan Jain Mandal, office bearers, who have always supported good cause for the community. We also take this pride in welcome Shri Jairaj Bhai Shah and Srimati Varsha Shah, parents of Suchit and Ambish, who are here. We also welcome family members of both the teams. We are also thankful to all our sponsors, including trophies by Healthy Crunch, by Monica Shah, wickets by Smith Engineering Company, maximum sixes by Patni Opticians, Team Player Award by Selfie Design, Man of the Series by MT Madan, medical sponsor Healing Pharma Private Limited, Your Health is Our World, jerseys and kits by JP Hairpins, goodies by Warmio, Love Freshly Served, hydrating sponsor White Divine, broadcasting partner Philco Trade Center Private Limited, balls sponsored by Allied Digital, IT managed responsibly, boundaries by V Jewels, Jewels by Varsha Exports, PPL app and man of the match sponsor SKV served since 1932, catch of the match by Trinity Entertainment, and special thanks to Kupchand Swarupchand Group, KS Group, for their support for the hoardings that were put across the city here in Mumbai as well as Surat. So thank you so much, Kupchand Swarupchand family. It's a Saturday morning. Weather is not that cool today. We are transitioning slowly from winter towards summer, early summer, I would say. Welcome everyone on behalf of our committee, Tushar Bhai Shah, Bhavesh Shah, Nishit Shah, Asit Shah, Vismay Choksi, Harshal Shah, Puneet Shah, Kavish Zaveri, Sahil Shah, and Viresh Bhai Shah. Well, last time these two teams clashed, it was 9th of January at Kavirni Sports Arena, where PHYSIONISH smashers were all out for 116, and Turf Blasters chased down those 117 runs for the loss of 4 wickets. So those are the memories, and Vilesh Mangesh Salvi was man of the match in that match, and Vilesh is going to start the proceedings as both the umpires, Prathamesh Angne and Ambarish Nayak, are on the field. Wicketkeeper is Manik Shah.
So today we will have 3 matches, tomorrow 3 matches, and by end of the day tomorrow we will get 4 teams for the playoffs. And then next weekend we meet for the playoffs. That's qualifier 1 eliminator, and then qualifier 2, and then third and fourth place match. Both the openers are on the ground. Samir Pisha, the first centurion this year, and he is along with his opening partner. So Samir Pisha is going to bat first at the striker's end, and his partner is Nirmit Shah. And first over, as usual, will be bowled by Vilesh Mangesh Salvi, popularly known as Wali Bhai. What a great game Wali played at Surat when we saw a super over between Kusum Warriors and Tough Blasters. Samir Pisha will face Vilesh Mangesh Salvi. Manish Shah is the wicketkeeper. Suchit Jairaj Shah is at slip. Smith Hiten Shah is in wideish gully. They have got Manish Shah, who was at deep cover. Now I think he's being brought into the circle, and Asit Shah is going to take his place at deep cover for the lefty. Manish Shah now at short extra cover. Harsh Sanghvi is at mid-off. Ankit Sunil Shah is at mid-on. Maulik Shah is at short square leg. And then we have got Nirav Mahendra Shah at fine leg. Well, Vinay Shah is at wideish third man, not to forget. So welcome to match number 25 as umpire Ambrish Naik signals play, and Vilesh Mangesh Salvi will be bowling left arm over the wicket to Samir P. Shah. Lefty to lefty, first up. Welcome to all our viewers who are tuned into this broadcast on YouTube channel of Patan Premier League. First delivery slightly tentative, but placement was good. They go for single. Ball was placed towards left side of Ankit Sunil Shah. That allowed a couple of seconds more for the batter to complete the single. So hardly any dew, and we will have a warm afternoon, it seems. The pitch is also looking good for batting. And lefty-righty combination certainly is interesting to watch in every match. PHYSIONISH Smashers have made minor adjustment in their batting order, and last match was a dream come true for them. They rose from the ashes like a phoenix bird. Tough Blasters had a fantastic game against SPS Superstars. A good leg delivery, couldn't quite time it well, but they still go for a single, score 2.
That was a nip backer and judged very well to place it in front of the square for a single. Smith Hitenshaw, the fielder. Score 3 without loss. Both the batters have started on a positive note. Normally you would see a couple of dot balls in the first 3 balls of Vilesh Salvi, but not today. PHYSIONISH have got 3 of 3. This time glanced behind the square for a single. Vinay Shah, the fielder, score 4. Very elegant looking shot, and that's a flick of the wrist. 4 valuable runs. We Jewels for Varsha Exports. Super flick. That was pitched towards the leg stump line and very easily played behind the square. Nirav Mahendra Shah could not stop it. Score 9 without any loss. End of over number 1. Score right now 8, correction. So over number 2 to commence from the Fatima High School end, as Suchit Jairaj Shah will be bowling over number 2. Suchit bowled exceptionally well last Sunday night against SPS Superstars. 5-4 is the fielding, 5 on the off and 4 on the on, as Nirmit Shah gets ready to face Suchit Jairaj Shah. Score 8 without loss. Oh, that was a turner, an off break, completely misread by batter as well as wicket keeper, and this will be 4 runs by way of byes. That was a dream ball. Believe you me, that was a dream ball. We Jewels 4, Jewels by Varsha Exports by way of byes. Suchit Jairaj Shah definitely not happy about it. That delivery reminded me of Irapalli Prasanna. Oh, this straightened a touch and travelled a little quick. So Suchit Jairaj Shah, using his experience so well, played at the inter-school levels under 15, as he told during the toss ceremony, and he has been playing since last 25 odd years. Oh, that ball hurried onto the body of Nirmit, kept low. An off break, a straighter one, again an off break. What next for Suchit Jairaj Shah? Oh, bamboozled him. That is Suchit Jairaj Shah for you. Scintillating Suchit. And that off break ball, Smith Engineering Company wicket number 1. Sharp turn. That was the delivery he started with, and these off breaks are doing wonders for tough blasters as Nirmit Shah gets out and Newmanen is Keyur Bipin Zaveri. Six balls, 2 runs for Nirmit Shah.
happy with the very first delivery that was missed. But then look at the variation that he is bringing in. He is bowling same off breaks at a different height and with a different speed, mixing it so well. (12 for 1). New man in is Keyur Bipin Zaveri, who played supremely well in the entire tournament this year. Last year he was instrumental in taking PHYSIONISH Smashers to the grand finale, and he will face Suchit Jairacha. A straighter one. Such a beautiful mixing by Suchit Jairacha. Sometimes the off break, sometimes the straighter one, sometimes slower one, sometimes quicker one. 12 for 1. A flighted delivery and a lovely on drive. Keyur Bipin Zaveri always reminding you of a class of a test match player, and that on drive spoke volumes about his batting prowess. So 2 overs, 13 for 1. So Suchit Jairacha, 1 over, 1 run, 1 wicket, as Vilesh Salvi starts from the far end for Keyur Bipin Zaveri. Slip is still in place. Fuller length delivery, this time driven nicely, but the timing was probably not that great, and Manish Shah has been saving a lot of runs every match, and he saved a single. This time turning it behind the square towards Asit for a single. Keyur Bipin Zaveri gets off the mark. 13 for 1. Projected score looks 122 at this stage with the current run rate, as Samir Pisha is on 6 of 4 with the help of 1 boundary. Bat and pad together, forward defensive stroke. Smith Hiten Shah, the fielder. You are watching Saurin Shah Presents Patan Premier League Season 5, match number 25. Turf Blasters won the toss and invited PHYSIONISH Smashers to bat first. A cracking shot, but what a sure shot boundary stop there by Manish. It was a blinder. Certainly 4 valuable runs saved, and look at the body language of Turf Blasters now. The match is hottening up. 14 for 1. Just guided this towards wideish third man. Vinay Shah, the fielder, score 15 for 1. PHYSIONISH Smashers are wearing orange t-shirt and black track pant, reminding you of Holland or the Netherlands cricket team. On the other hand, black and black is the attire for Turf Blasters, reminding you of Kiwis. Some fantastic run savings by Manish Shah. End of over number 3. The score is 15 for the loss of 1 wicket. So just 2 runs came.
Suchit Jairaj Shah, 2 ball is over number 2. Last over he gave away just 1 run and claimed important wicket of Nirmit Shah. And since he is an off-break bowler, it will be interesting how he bowls to the lefty. There's a slip in place, Vilesh Salvi. Lofted it, and that goes many a miles. We Jewels 6. Jewels by Varsha Exports. Perfect execution, stable head, and a perfect body balance for that 6. These strokes are delightful to watch, isn't it? Showing glimpse of David Warner there. Scored 21 for 1. Stump to stump this time. Suchit Jairaj Shah getting ready now from the top of his bowling mark, right arm round. Magic ball. Suchit is mixing it up so intelligently. After going for a whack, he knows how to come back. 21 for 1. Flighted delivery and that was an easy catch. Although there was no one near the catching position. Fielded very well by Maulik Shah. Turf Blasters, the most impressive team this year, the way they have played the cricket. Another good delivery, just a push in front of the square towards Maulik. Samir Pisha takes a single. 22 for 1. This nice broadcast coming to your smartphone, laptops, desktops is courtesy Philco Trade Center Private Limited. Deepak Bhai and Ketul Bhai. This ball straightened a touch, but Keur Bipin Zaveri had a good look at that delivery and played it square of the wicket for a single. End of over number 4. Suchit Jairaj Shah. 4 overs 23 for the loss of 1 wicket. 8 runs came of that over. Suchit Jairaj Shah 2 overs 9 runs 1 wicket. Keur Bipin Zaveri not out on 3 of 6. Samir Pisha not out on 14 of 12 with the help of 1 boundary and 1 6. Batsman out, Nirmit Shah bowled Suchit Jairaj Shah. Wali with channel ball. What is a channel? A channel is a straight line between the 3 stumps on both the ends. That ball kept low. There is a loud appeal, but umpire Ambrish Nayak unmoved. Slightly low and slow. Vilesh Salvi. He's a jam of a bowler. He uses the seam to his advantage. A single towards mid-on. Harsh Sanghvi, the fielder. Tough Blasters and PHYSIONISH Smashers both are at 12 points. We also have SPS Superstars who are at 12. MTM Riders are in 3rd position with 16 points. Kusum Warriors at 2nd position with 20 points.
That ball deviated away from the left-hander after pitching on the off. And table toppers, well, no surprise, SK Strikers with 24 points. (24 for 1). Fifth over. Well left by Samir P. Shah. Wali is known to create late movement as well, and Samir P. Shah is not in any hurry. He knows that this is a critical game and his wicket is going to be of prime importance for Physionish smashers. Oh, that was a takeoff that you would want to see. Wali producing another magic ball. A Jaffa. 5 overs, 24 for 1. Just 1 run came off that delivery. And that is what I like about Vilesh Mangesh Salvi and Suchit Jairaj Shah. If one is costly, another one is economical. If another one is expensive, the other one helps with miser of an over. You know, I like my things personalized. Here's how I do it. It's that easy. नया ओवर लेकर आ रहे हैं सुचित जयराज शाह। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है फातिमा हाई स्कूल विद्या विहार घाटकोपर पश्चिम में, जहां आप देख रहे हैं सौरीन शाह प्रेजेंट पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5। और यहां पर एक कड़क करारा शॉट था और अंकित सुनील शाह ने चौका बचा लिया। एक विकेट के नुकसान पर बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, बल्ला एक सीधी लकीर पर आता हुआ। स्ट्रेट ड्राइव को देखने का एक अलग मजा है। इस बार वाइड बॉल। 26 for 1। अंपायर प्रथमेश आंगणे ने वाइड दिया है। इस बार बॉल टर्न होकर अंदर की तरफ आई और समीर पी शाह एलबीडब्ल्यू। बिल्कुल ऑफ ब्रेक गेंद थी लेफ्टी बैटर के लिए और यहां पर सुचित जयराज शाह ने बड़ा विकेट ले लिया है। गिरने वाले दोनों ही विकेट सुचित जयराज शाह के नाम और स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 2। समीर पी शाह एलबीडब्ल्यू। सुचित जयराज शाह एक बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटते हुए। समीर पी शाह एक चौका लगाया, एक सिक्स लगाया और देखिए किस तरह गेंद अंदर की जानिब मुड़ी थी, नीची रही और एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए मिनेश निरंजन शाह। फिजियोनिश स्मैशर्स ने जो पिछला मुकाबला जीता उसमें मिनेश निरंजन शाह की पारी को भी याद किया जाएगा। समीर पी शाह ने आउट होने से पहले 14 रन बनाए, 16 गेंदों का सामना किया, एक विजुअल्स 4 और एक विजुअल्स 6 लगाया। सुचित को मिलती हुई दूसरी सफलता और छोटा विहान वहां जाकर अपने पापा से कुछ डिमांड करता हुआ। क्या मांगा होगा बेटे ने अपने पापा से? नन्हे मुन्ने बच्चे अपने फैमिली के साथ क्रिकेट एंजॉय करते हुए हमने देखा। समीर पंकज शाह का बेटा भी आता है, हमारे मितुल शाह का बेटा वीरल किरीट शाह के सुपुत्र को आप देखते हैं और आज विहान को भी हम देख रहे हैं हर मैच में। ये फ्यूचर के क्रिकेटर्स हैं। पाटन प्रीमियर लीग के 15 या 16वें सीजन में आप इनको खेलता हुआ देख सकते हैं। पर 2। पहला विकेट गिरा तब स्कोर था 12, दूसरा गिरा है तब स्कोर है 26। भागीदारियां नहीं हो पा रही है फिजियोनिश स्मैशर्स के लिए।
सुचित जयराज शाह, बहुत ज्यादा टर्न लेती हुई अंपायर द्वारा। (27 for 2). बैटर है मिनेश निरंजन शाह। बहुत लेट खेला था वहां पर, थोड़ा स्लाइड होते हुए मिनेश शाह और उनके बाजू से गेंद गई है। शाह ने वहां पर बैकअप जरूर किया, थोड़ा सा फिसलन घास की और 20 for 2। पावर प्ले में स्कोर नियंत्रित रखा है। और इस बार करारा कवर ड्राइव, दौड़ने की जरूरत नहीं है, चाबुक शॉट और ये लगा विजुअल्स चौका। ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। थोड़ा समय गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन वो चाबुक शॉट था। शानदार स्ट्रोकिंग इसी को कहते हैं केयूर बिपिन जवेरी। टेक्निकली बहुत ही सही बल्लेबाज है। 32 पर 2। इस बार ऑन ड्राइव लेकर एक रन लिया। अभिगम भी है, एक रन लेकर स्ट्राइक को बदले। यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ 6 ओवर के बाद स्कोर 33 for 2। और उनकी जगह आ रहे हैं भाविक। तीन ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट ली है सुचित जयराज शाह ने। बुलडप शाह को और उसके बाद एलबीडब्ल्यू की समीर शाह को। विलेश मंगेश साड़वी अब अपना चौथा और आखिरी ओवर करेंगे। पारी का 7वां ओवर रहेगा। हमारे साथी स्कोरर सतीश सिंह ये सारी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। स्कोर बुक और डिजिटल स्कोरिंग एक साथ। ये लाइव टेलीकास्ट हमारी टेक्निकल टीम शिवा और उनकी टीम की भी दाद देना चाहूंगा। हमारे कैमरामैन ने बहुत उम्दा काम किया है। इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक था, रुक कर आई। स्पोर्ट्स नेक्स्ट इन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया है। मनीष तारकर, कविता जायसवाल और उनकी पूरी टीम, इनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारे फोटोग्राफर सौरभ बानेज अलग अलग एंगल से फोटोग्राफ्स लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर पोस्ट करते आ रहे हैं। विलेश साड़वी से कुछ सीखने जैसा है। अलग अलग लाइन, अलग अलग लेंथ, गति में परिवर्तन। विलेश मंगेश साड़वी। पावर प्ले हालांकि खत्म हो चुका है और इसलिए अगर फील्डिंग की जमावट को अगर हम देखें तो इस वक्त 5 का क्षेत्ररक्षण है। केयूर ने गेंद को टप्पा खाने दिया और फिर खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट पर आसिफ शाह के पास। (34) 2 विकेट के
नुकसान पर। 34 for 2। केयूर बिपिन जवेरी 11 पर, मिनेश निरंजन शाह 1 रन पर। आउट होने वाले बैट्समैन है निर्मित शाह, 6 बॉल 2 रन, और फिर 16 गेंदों में 14 बनाए समीर पी शाह ने। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी ये विशेषता रही है विलेश साळवी की पूरी प्रतियोगिता के दौरान। मिनेश निरंजन शाह सामना करने जा रहे हैं। इस बार बॉल नीचे रही, अपील है अमरीश नायक के पास, और शायद जो कांटेक्ट था वो चैनल के बाहर का रहा था, लेकिन विलेश मंगेश साळवी की यह खास बात है, बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब विलेश साळवी को विकेट नहीं मिलता, और विलेश मंगेश साळवी 4 ओवर 12 रन, कोई विकेट नहीं। 7 ओवर 34 रन, 2 विकेट। ये एक्शन रिप्ले। फुटवर्क बराबर नहीं था मिनेश का, पैर चल नहीं रहे। गेंदबाजी में पहली तब्दीली, विनय शाह अब फातिमा हाई स्कूल एंड से बॉलिंग करेंगे। क्षेत्ररक्षण में अब विलेश साळवी की जगह हम देख रहे हैं जैनम शाह को। लगातार 4 ओवर करने वाले विलेश मंगेश साळवी। देखिए, कहने के लिए 4 ओवर है, लेकिन 20 ओवर के खेल में 4 ओवर मतलब एक साथ मेहनत लगती है, क्योंकि आपको बॉलिंग के बाद फील्डिंग भी करनी है। टीम की गेंदबाजी की 20% ताकत आपकी गेंदबाजी पर निर्भर है। तो एक अच्छा स्पेल विलेश मंगेश साळवी। फ्लाइटेड गेंद इस बार गेंद के स्पिन को खत्म करते हुए ड्राइव किया है 1 रन के लिए नीरव महेंद्र शाह के पास। $35 for 2। आप देख रहे हैं साउरिन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5 मैच नंबर 25। इस बार मिनेश को न्योता दिया था ड्राइव करने के लिए। मिनेश थोड़ा सा मुश्किल उनके दाहिने पैर में धीरे धीरे चलते हुए रन को पूरा किया है। 36 पर 2, 36 for 2। 8 विनय की नीचे रहती हुई गेंद, और केयूर बिपिन जवेरी खेलते हुए डीप कवर में आसिफ शाह के पास 1 रन। जो बीच वाले ओवर्स है उसमें आपको इस तरह का सेटल्ड क्रिकेट देखने मिलेगा, जहां बल्लेबाज पार्टनरशिप बनाने में लगे हैं। इस बार भी गेंद थोड़ा रुक कर आई, धीमे से पुश किया मनीष शाह के पास मिनेश ने। 38 for 2। चार रन अब तक आए हैं इस ओवर में। और धीमा लेग ब्रेक, केयूर बिपिन जवेरी की एकाग्रता को भंग करने वाली वो गेंद थी, मानो एक सफेद रंग की अप्सरा केयूर के ध्यान मग्न होने की स्थिति को भंग करती हुई मेनका और रंभा की तरह। इस बार ड्राइव किया 1 रन और। ओवर समाप्त होता हुआ एक ओवर में 5 रन दिए। 9 for the loss of 2। नीरव महेंद्र शाह अब बॉलिंग मार्क की तरफ जा रहे हैं, और दोहरा बॉलिंग प्रदर्शन में बदलाव हम देखेंगे।
एक और खास बात इस टूर्नामेंट में टर्फ ब्लास्टर्स की हमने देखी है, उन्होंने हमेशा 5 बॉलर से ही गेंदबाजी की है। नीरव महेंद्र शाह नया ओवर करेंगे। बाकी की पांचों टीमों ने 7 गेंदबाजों को इस्तेमाल किया है, लेकिन टर्फ ब्लास्टर्स बॉलिंग यूनिट पर मुख्तार है। चौथी गेंदबाज और पांचवी गेंदबाज आसिफ शाह रहेंगे। केयूर 20 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। संयम भरी शुरुआत है केयूर बिपिन जवेरी की। इस बार अप्रत्याशित रूप से उठती हुई गेंद, टर्न और बाउंस दोनों था उस लेग ब्रेक में। ऐसी गेंद में टप्पा खाया, काफी समय था उनके पास खेलने का। डीप कवर में मौलिक शाह के पास 1 रन। दो विकेट के नुकसान पर स्कोर 40 for 2। इस बार बल्ले के मुंह को खोला था, लेकिन गली में गली बॉय वहां पर देखिए। अब अंकित सुनील शाह गली में आ चुके हैं, यानी कि स्मिथ हितेन शाह को आउटफील्ड में अब रख दिया है। लॉन्ग ऑफ पर स्मिथ हितेन शाह। बहुत जबरदस्त कॉलिंग थी, बड़ी आवाज सुनाई दी, वेट। यही सही क्रिकेट खेलने का अंदाज है। 3 कॉल होते हैं, या तो यस, या तो नो, या तो वेट। और जब कॉलिंग अच्छी रहती है तो रनआउट के जो चांसेस है वो लगभग खत्म हो जाते हैं। 40 पर 2 पारी का 9वां ओवर। टर्फ ब्लास्टर्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए। एक और लाजवाब उठती हुई गेंद और नीरव महेंद्र शाह अपने ओवर को बहुत तेजी से अंजाम देते हुए 9 ओवर की समाप्ति, 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 10 लेकर आ रहे हैं विनय शाह। एकमात्र ओवर किया विनय ने, 5 रन दिए, जिसमें नीरव महेंद्र शाह ने अपने पहले ओवर में महज 1 रन दिया। दोनों बैटर्स बात करते हुए, मिनेश निरंजन शाह और केयूर बिपिन जवेरी। नए ओवर की पहली गेंद बेहतरीन ऑन ड्राइव, और स्मिथ हितेन शाह को वहां रखा ही इसलिए गया है। गेंद को उठा दिया और दे दिया वापस। 41 पर 2, 41 for 2। केयूर बिपिन जवेरी ने काफी बेहतरीन ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव और कवर ड्राइव्स लगाए आज। इस बार मिनेश ने घुटा दिया है,
गेंद के नीचे नीरव महेंद्र शाह ने एक आसान कैच छोड़ा। टर्फ ब्लास्टर्स के साथ ये समस्या कई दिनों से बनी हुई है और एक सुनहरा अवसर खो दिया। मिनेश निरंजन शाह बच गए। मिनेश पहुंचे 4 पर, 3 पर उनको ड्रॉप किया गया। वाइड बॉल। (43 for 2). केयूर बिपिन जवेरी वहां पर सिंगल लेते हुए हर्ष संघवी के पास वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। दोनों बैटर्स अब अच्छा खेल रहे। आखिरी विकेट जब गिरा तब स्कोर था 26 और 18 रनों की भागीदारी। वाइड लेग ब्रेक। 45 for 2। बॉल जाकर पैर पे लगी लेकिन रन लेना मुनासिब नहीं समझा था क्योंकि मानित शाह तुरंत पहुंच गए थे वहां। 45 for 2। 10th ओवर। इस बार थोड़ा अपिश जरूर खेला है। वो स्क्वायर कट पर 1 रन लिया। अंकित सुनील शाह ने गेंद को उठाया। मिनेश ने चलकर अपने रन को अंजाम दिया और 20 रनों की भागीदारी तीसरे विकेट के लिए। 10 ओवर की समाप्ति। 46 for 2 at the end of 10 overs. केयूर बिपिन जवेरी on 17. Minesh Niranjan Shah is not out on 5 of 12.
players have rejuvenated themselves with a drinks break, and welcome back to Fatima High School, Vidya Vihar, Ghatkopar West, Mumbai, where you are watching Saurin Shah presents Patan Premier League Season 5, match number 25. Turf Blasters taking on PHYSIONISH Smashers. Both the teams are at 12 points each. Turf Blasters won the toss, invited PHYSIONISH Smashers to bat first. Start of the fresh over from Nirav Mahindra Shah. He gave away just one run in his first over and concedes a single of the first delivery of 11th over. 47 for 2. So 24 runs came of the first 5 overs, 22 came of the next 5 overs. They lost 1 wicket in first 5 overs and they lost 1 more wicket in last 5 overs. Special thanks to Shri Patan Jain Mandal, under whose guidance and support we are making progress every year in Patan Premier League. Beautiful leg break. Mahindra Shah bringing good variations, turn and bounce, and this should be a motivation for PHYSIONISH Smashers spin attack as well. Slightly quickish, and Keur takes a single towards Maulik. PHYSIONISH Smashers are owned by Bhavik Shah, Minesh Niranjan Shah and Nirvan Shah. On the other end, Turf Blasters are owned by Suchit Jairaj Shah. We also welcome Mamta Shah of White Divine, our hydrating sponsor. We also have august presence of Mr. Jairaj Shah and Srimati Varsha Shah, parents of Suchit Jairaj Shah and Ambish Jairaj Shah. On the leg stick and stopped well by Vinay inside the circle. 48 for 2. Special thanks to all the sponsors who have made this show possible. This time up in the air, and Asit drops a catch this time. Another life given to Minesh Niranjan Shah. Waiting for the umpire signal. And it's a 6. V Jewels 6, Jewels by Varsha Exports. That was to be caught and Asit has dropped it. Minesh Niranjan Shah was dropped on 3. And now he is dropped on 6. Nirav Mahindra Shah not at all happy. 11 overs, 54 for 2. We need to continue the next over. Special thanks to our trophy sponsors, Healthy Crunch by Monica Shah, Wickets by Smith Engineering Company, Maximum Success from Patni Opticians, Team Player of the Match Award by Selfie Design, Man of the Series by M.T. Madan, Medical Sponsors Healing Pharma India Private Limited, Your Health is Our World. Jerseys and kits are sponsored by JP Hairpins, goodies by Warmio, Love Freshly Served, hydrating sponsor White Divine, broadcasting partner Philco Trade Center Private Limited, cricket balls by Allied Digital, IT managed responsibly, boundaries by V Jewels, Jewels by Varsha Exports. PPL app and Man of the Match by SK, we serve since 1932, Catch of the Match by Trinity Entertainment. And special thanks to KS Group for their courtesy towards hoardings that were put in Mumbai and Surat, Kupchand, Swarupchand and family. $55 for 2. 2 drop catches.
Niranjan Shah dropped on 3, dropped on 6. He's on 12. Oh, a quicker leg. Vinay Shah, a veteran in the cricket circle of Patan Jain community. Lobbed in the air, but there's no one who can catch it. Dinesh Niranjan Shah. Dinesh is taking his chances. 55, rather 56 for 2. That ball turned into the right-hander, capped low, and Keyur Bipin Zaveri took a single. Minesh having a minor injury in his right leg. He is bending himself again and again, trying to get his leg guards right. 57 for 2. 12th over. Push in front of the square. .58 for 2 after 12. Keyur Bipin Zaveri on 20 of 31. Minesh Niranjan Shah on 14 of 19. Another bowling change as we see Asit Shah now to bowl from the far end. Nirav Mahendra Shah bowled 2 overs. Vinay Shah has got one more over left. This is one of the regular event in the calendar of Patan Jain community where people enjoy cricket for 2 months. January and February are the cricket months for Patan Jain community of Mumbai. Every year we travel to new destinations. Asit Shah been popularly known as Bajji, and is going to bowl right arm over the wicket. This time whacked in front of the square. This time Smith, he then stopped it. 4 easy runs. And this is V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. Asit Shah dropped a straighter one and very nicely hit over the head of the bowler. 4 runs. Smith tried hard. .62 for it's given wide now. So 63 for the loss of 2. That ball kept low. Asit bowling those leg cutters with ease. Asit also contributed well with bowling, and he was that run for the super over match. Oh, a gentle drop. Beautiful bowling action, reminding me of Madan Lal, who used to be popularly known as Punjab Mail. If Kapil Dev was Haryana Express, Madan Lal was known as Punjab Mail. He jumps like Madan Lal and delivers. Asit Shah, 63 for 2. A cracking on drive, and this won't be stopped. V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. An over pitch delivery, very easily driven, and that was a spectacular on drive.
Niranjan Shah enjoying batting now. Dropped on 3, dropped on 6. He's on 22. 67 for 2. Projected score 113 at the current run rate. A horizontal bat shot. Slog swept towards Bhavik for a single. .68 for 2. Over number 13. Asit has given away 10 runs in this over. A lower full toss and Keyur Bipin Zaveri driving it for a single. Minesh is playing a bit aggressive now, and Keyur Bipin Zaveri, as usual, playing a role of a sheet anchor. 69 for 2 after 13. Asit 1 over 11. So now that Suchit Jairaj Shah is back on the field, Bhavin again will be coming out. Vinay will be bowling his last over, 3 overs, 15 runs, no wicket. Vinay would want to break this partnership, as this partnership has prospered a lot. Last wicket fell on 26. Slapped that delivery so well for a single. Square of the wicket towards deep backward point. .70 for 2. Wide ball. 71 for 2. Umpire Prathamesh Angne officiating at the bowler's end, and Ambrish Naik officiating at the striker's end. Minesh goes for another big shot. This time it won't be catched because it dropped a couple of meters ahead of Maulik Shah. .71 for 2. And this will be a sure shot 6. High and handsome shot, and partnership of 50 runs up between the two. We Jewel 6, Jewels by Varsha Exports. Last wicket fell on 26, and right now they are 78 for 2. Keyur Bipin Zaveri now slowly taking the charge. Current run rate 5.78. But then this partnership is definitely becoming a headache for Tough Blasters. A slower leg break. Bending on his knees, wanted to go for a big heave and misses it. 80 for 2. This time a submarine ball and given wide. In his last over, slightly slower one, and Vinay finishes a spell.
Vinay bowled 4 overs, 26 runs and no wickets. At the end of 14 overs, 80 for 2. PHYSIONISH smashers after they are being invited by tough blasters to bat first. Asid into his second over. This time punched that well, but Manisha again come to the rescue of side. He has stopped another boundary. Manisha has done great job in fielding department. This year we have seen quite a few good fielders. Rishit Ketan Shah, not to forget, Dhwanil Shah, Smith Hiten Shah, Manisha, Bhavya. These are a few fielders who have saved a lot of runs this year. In the bowling department also we have seen a few new stars. Varun Goradia, especially to be mentioned for MTM Riders. Agam for PHYSIONISH smashers has bowled really well. Minesh goes for a big whack. This time he will be definitely caught. Smith Engineering Company wicket number 3 and Trinity Entertainment catch of the match by Smith Hiten Shah. Minesh Niranjan Shah gets out on 25 and Asit Shah gets a wicket. Newman in is Kaushal Praveen Trivedi. Asit Shah invited Minesh Niranjan Shah to go for the big shot. He was already dropped on 3, already dropped on 6. And he is out on 25. So that means he has scored 22 extra runs after being dropped in the first place. But these 25 runs are equally important because it's a good partnership with Keyur Bipin Zaveri. .56 runs partnership between these two. Smith Hiten Shah now. I mean, look at the master plan of Suchit Jairaj Shah. Smith Hiten Shah in outfield during the slog overs makes sense. And he took that catch of Minesh Niranjan Shah close to his waist. Asit gets rewarded. Oh, that was a blinder. And third umpire is being called for run out.
So Kaushal Praveen Trivedi survives, but that was a brilliant stop by Asit Shah. He sure shot stopped the boundary. Played with soft hands. Single, nicely gathered by Manit behind the stumps. 15 ओवर की समाप्ति पर 83 for 3. केयूर बिपिन जवेरी 31 रन पर खेल रहे हैं. आसित शाह 2 ओवर 14 रन 1 विकेट. आसित के पहले ओवर में 11 रन आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में केवल 3 रन देकर 1 विकेट लिया आसित ने. पारी का 16वां ओवर अब प्रारंभ करेंगे सुचित जयराज शाह. सुचित ने अब तक 3 ओवर किए हैं, 18 रन देकर 2 विकेटें ली है. पहले दोनों विकेट निर्मित शाह जिनको उन्होंने बोल्ड आउट किया, और समीर पी शाह जिनको एलबीडब्ल्यू आउट किया. केयूर बिपिन जवेरी का विकेट यहां अहम रहेगा. केयूर के नाम पर अर्धशतक रहे हैं इस साल, और 20वें ओवर तक अगर केयूर नॉट आउट रहता है तो ये स्कोर जो है 130 के आसपास हमें देखने मिल सकता है. नए ओवर की पहली गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है विलेय साळवी के पास. साळवी क्योंकि बॉलर है, उनका आर्म बहुत अच्छा है. कौशल प्रवीण त्रिवेदी अब स्ट्राइक पर. आप देख रहे हैं सौरीन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5 मैच नंबर 25. टर्फ ब्लास्टर्स टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है. उन्होंने फिजियोनिश स्मैशर्स टीम को पहले बैटिंग के लिए इनवाइट किया है. ये ऑन ड्राइव पर 1 रन. जिगर साळवी का थ्रो वहां पर थोड़ा देरी से पहुंचा. 2 रन पूरे करते हुए वहां पर कौशल प्रवीण त्रिवेदी. (86 for 3). तेज गेंद सुचित की. इस बार लेग नीचे रही, खेला था फ्लाई स्लिप में, फील्ड अच्छा किया गया. अच्छी कोशिश वहां पर. अंकित सुनील शाह मेरे ख्याल से थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि सब ठीक हो, क्योंकि अंकित सुनील शाह बहुत अच्छे बैटर हैं इस टीम के. ओपनिंग बैटर है. इस बार टप्पा खाते ही ऑन दी राइज खेल दिया है. गेंद जा रही है. स्मिथ हितेन शाह ने क्या छलांग लगाते हुए उस चौके को बचा दिया. रीले थ्रो और 2 रन पूरा करता हुआ केयूर बिपिन जवेरी. स्मिथ हितेन शाह को पावर प्ले में सर्कल के अंदर रखना और पावर प्ले के बाद बाहर रखना, ये कितना कारगर साबित हो रहा है टर्फ ब्लास्टर्स के लिए. 89 रन 3 विकेट पर. सुचित जयराज शाह 4 ओवर 24 रन 2 विकेट. 16 overs 89 for 3. केयूर बिपिन जवेरी not out on 34 of 44. Kaushal Praveen Trivedi not out on 3 of 3.
जैनम शाह और भाविक शाह दोनों अब सब्स्टिट्यूट के रूप में अंदर आ चुके हैं। जिगर साड़वी मेरे ख्याल से अंदर बने रहेंगे क्योंकि अंकित सुनील शाह वापस लौट रहे हैं। उनके कंधे में एक चोट आई है, हो सकता है मांसपेशियों में खिंचाव हो या तो फिर जो कंधा है उसको थोड़ा दर्द हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, अंकित सुनील शाह का बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है। नया ओवर प्रारंभ करेंगे नीरव महेंद्र शाह। जवेरी ने फिजियोनिश मैचेस के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इस प्रतियोगिता में इस साल। अपनी टीम के लिए वो सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। और बल्लेबाजों के स्टैक रैंकिंग में देवेंद्र ध्रुवा के साथ एक हेल्दी कंपटीशन में केयूर बिपिन जवेरी फॉर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एज वेल एज बेस्ट बैटर। कौशल प्रवीण त्रिवेदी सामना कर रहे हैं नीरव महेंद्र शाह का। 89 फॉर 3, 17th ओवर। इस बार बल्लेबाज और विकेटकीपर दोनों को चकमा देती हुई गेंद वाइड बॉल पर आने वाले 4 रन। वी ज्वेल्स चौका, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। ये रन महंगे पड़ेंगे टर्फ ब्लास्टर्स को। छूटे हुए कैचेस और वाइड रन्स। 94 फॉर 3। वाइड बॉल। 95 फॉर 3। वाइड रन की संख्या बढ़ती जा रही है टर्फ ब्लास्टर्स के लिए। और अंकित सुनील शाह की चोट, दो चीजें इस वक्त। इस बार एक कोशिश रही थी भाविक द्वारा और ये कैच छूटता हुआ। कौशल प्रवीण जीवन दान जब उनको ड्रॉप किया गया 2 रन पर। मुश्किल चांस था, लेकिन जब आप प्रतियोगितात्मक क्रिकेट खेलते हैं इस तरह के कैचेस लेना ये लाजमी है। नाइन्टी सिक्स फॉर 3। इस बार थोड़ा रुक कर आई केयूर बिपिन जवेरी, ये सुनिश्चित करते हुए कि कैच आउट नहीं होंगे। जितना सीधा प्लेसमेंट की जाए उतना उन्होंने कोशिश की और रन पूरा किया हर संघवी के पास। 7 फॉर 3। इस बार ऑन ड्राइव 98 फॉर 3। इस बार स्वीप कर दिया जिगर साड़वी के पास। और देखिए वहां पर मानित भी थोड़ा सा नाराज, जिगर से थ्रो की जरूरत क्या थी। तो 100 रन पूरे होते हुए यहाँ पर फिजियोनिश स्मैशर्स के। पहले 50 रन बने थे 11वें ओवर में, और अब अगर हम देखते हैं तो उसके बाद वाले जो 50 रन है वो केवल 42 गेंदों में। पहले 50 66 गेंदों में, दूसरे 50 42 गेंदों में आसिफ के छोर को बदला गया है। नीरव महेंद्र शाह 3 ओवर 20 रन, कोई विकेट नहीं।
तमाम YouTube के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं PHYSIONISH प्रेजेंट्स पाटन सीजन 5। नए ओवर की पहली गेंद, धीमा लेग ब्रेक, अपील स्टंप आउट की तीसरे अंपायर की मदद। केयूर बिपिन जवेरी 35 पर खेल रहे हैं, 46 गेंदों का सामना किया है। सामना करेंगे आसित शाह का। इस बार भी बीट किया आसित ने अपने लेग कटर्स के जरिए। अपील और यहां पर स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट गिरता हुआ चौथा स्टंप आउट करवा दिया आसित शाह ने। लगातार लेग कटर्स पर परेशान कर रखा था केयूर बिपिन जवेरी को, और ये बड़ा विकेट और नए बल्लेबाज के रूप में अब मैदान में उतरते हुए आकाश ध्रुवा। जवेरी ने अच्छी पारी जरूर खेली, लेकिन उनका 20वें ओवर तक रुकना बहुत जरूरी था। इनिंग्स को फिनिश करके वे आ सकते थे, और थोड़ा गुस्सा उनके चाल में नजर आ रहा है। अपने बल्ले को पैड के ऊपर मारते हुए वो आ रहे हैं। आसित शाह को देखते ही देखते 2 विकेट मिली है। नए बैटर है आकाश ध्रुवा। एक ऐसा समय था जब लग रहा था स्कोर 130-35 तक जा सकता है। विकेट लेकर एक बार फिर से अंकुश में लाया है स्कोर को आसित ने। आसित का
प्रभावशाली गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है इस प्रतियोगिता में। एक ऐसी टीम है जिसने इस पूरे प्रतियोगिता में अपने 5 गेंदबाजों पर ही भरोसा रखा, छठे गेंदबाज को बॉलिंग नहीं करवाई। आकाश ध्रुवा ड्राइव करते हुए, आसान गेंद थी, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया है। बेहतरीन थ्रो वहां पर जैनम का मानित के दस्तानों में। एक 101 पर 4। आज से लगभग 1 महीना पहले जब 9 जनवरी को बोरिवली के कावेरी स्पोर्ट्स एरिना में ये दो टीमें भिड़ी थी, तब फिजियोनिश स्मैशर्स को ऑल आउट किया था 116 पर टर्फ ब्लास्टर्स ने और 6 विकेट से मुकाबला जीता था। वाइड बॉल 102 पे 4। टर्फ ब्लास्टर्स चाहेंगे कि आज भी 120 के अंदर पारी को सिमटाया जाए। कौशल इनसाइड आउट, ये कवर ड्राइव और 1 रन। दूसरा लेने का प्रयास वहां पर सफल नहीं हो पाएंगे ऐसा लग रहा है, आउट होने का खतरा और तीसरे अंपायर की मदद। मनीष का थ्रो वहां पर जरूर आया था, देखें मानित के पास, मानित ने वापस आसित को गेंद दी और रनआउट की अपील है। तीसरे अंपायर के पास फैसला रुका हुआ। नीरव महेंद्र शाह अपना आखिरी ओवर अब लेकर आ रहे हैं। अभी तक कोई विकेट नहीं मिला है नीरव महेंद्र शाह को। आसित शाह 3 ओवर 18 रन 2 विकेट। अभी भी करंट रन रेट 5.78 का बना हुआ है और किसी भी कीमत पर 120
का जो पहला मील का पत्थर है वो हासिल करना चाहेंगे फिजियोनिश स्मैशर्स। 120 गेंदों के 120 रन चाहिए ही चाहिए। पिछली बार फिजियोनिश स्मैशर्स ने 116 बनाए थे और ऑल आउट हुए थे टर्फ ब्लास्टर्स के सामने अपने राउंड रॉबिन मैच में। इस बार मिस टाइम किया, बॉल हवा में जरूर रही है। मनीष के पास जाती हुई गेंद, दूसरा लेना चाहते थे वहां पर और ले लिया आकाश ने दूसरा रन। 1 को 2 में तब्दील करना ये प्राथमिकता है इस वक्त और उस पर काम करते हुए आकाश ध्रुवा। 106 पर 4। आकाश ध्रुवा के स्ट्रोक के रेंज को देखते हुए मनीष शाह को एक्स्ट्रा कवर में बहुत डीप भेजा गया है। इस बार स्ट्रेट ड्राइव और स्मिति तंचा के पास जाती हुई गेंद। एक 107 पर 4। स्मिति तंचा लॉन्ग ऑफ पर बहुत अच्छा काम करते हुए, हमने देखा एसके स्ट्राइकर्स के हर्षल शाह को लॉन्ग ऑफ पर बेहतरीन फील्डिंग करते हुए। कुछ फील्डिंग पोजीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से खिलाड़ी याद रह जाते हैं। 107 पर 4। इस बार बल्ले के मुंह को खोला था लेकिन भाविक ने चौका बचाया है। 1 रन और। 108 पर 4। नीरव महेंद्र शाह बॉलिंग करेंगे अब आकाश ध्रुवा को। आकाश 3 बॉल 4। आकाश ध्रुवा ने लॉफ्ट कर दिया वहां पर। 1 रन पूरा किया, दूसरा लेने जा रहे हैं। मनीष का थ्रो अच्छा आ रहा है लेकिन 2 लेने से नहीं रोक पाएंगे। आसिफ शाह ने बैकअप किया। 1 चौका नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, 2 डबल रन लीजिए क्योंकि वो 1 चौके के बराबर है। बल्लेबाजी ये रिक्शा ड्राइविंग की तरह है, अगर 150-200 का भाड़ा न भी मिले तो 21-21 रुपए के भाड़े मारते रहिए। इस बार आसान कैच रहेगा जैनम, और जैनम के हाथ से भी अब कैच छूटा है। और अब जैनम के मुंह से भी खून आ रहा है वहां पर। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट को आज बिजी रखा है खिलाड़ियों ने। नीरव महेंद्र शाह अपना ओवर समाप्त करते हुए 4 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं। और 20वां और आखिरी ओवर करेंगे आसिफ शाह। इस मैच में अब तक अच्छी पकड़ रही है टर्फ ब्लास्टर्स की, लेकिन अगर छूटे हुए कैच पकड़े जाते तो ये स्कोर 100 के अंदर रहता। आकाश ध्रुवा ने इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेल दिया है, वहां पर एक अच्छी कोशिश मिले साड़वी की। 1 रन पूरा किया। नीरव महेंद्र शाह बैकअप बनकर आए वहां पर वाली के लिए। एक 12 पर 4। और नजर हटी, दुर्घटना घटी।
सीम के सहारे अंदर की तरफ कटी थी गेंद और बोल्ड आउट कर दिया स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी। विकेट नंबर 5 आसित को मिलती हुई तीसरी सफलता और नए बैटर आ रहे अब कप्तान भाविक शाह। गेंदबाजी में हमने देखा रचित कौशिक शाह और समीर पंकज शाह एमटीएम राइडर्स और एसके स्ट्राइकर्स के लिए 2 गेंदबाज काफी आगे चल रहे विकेटों के मामले में, लेकिन आसित शाह भी पीछे नहीं है। आज 3 विकेट आसित के नाम। ये 2 टीमों में जो भी टीम आज मैच जीतेगी वो 16 पॉइंट पर पहुंच जाएगी। एमटीएम राइडर्स ऑलरेडी 16 पर है, तीसरी वरीयता पर। अन्य 2 टीमें भी जो 12 पर हैं उसमें फिजियोनिश स्मैशर्स 12, एसपीएस सुपरस्टार्स 12, टर्फ ब्लास्टर्स 12। टेबल खुला है अभी भी, ये अच्छी बात है। बैकफुट पर जाकर पंच लगाने का प्रयास, मनीष के बाजू से 1 रन भाविक ने पूरा किया। फिजियोनिश स्मैशर्स के पिछले विजय में भाविक की भी काफी उपयोगी रन रहे थे। लगभग 16-17 रनों की पारी उनके द्वारा खेली गई थी। 113 पर 5। फुलर लेंथ की बॉल। आसित शाह हमारे कमेटी मेंबर भी हैं, पाटन प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य आसित शाह। इस बार ड्राइव किया है, कम से कम 1 रन मिलेगा, दूसरे की कोशिश रहेगी, लेकिन मनीष का थ्रो आता हुआ मानित के पास और यहां पर स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट शायद होते होते रह गया। आकाश ध्रुवा पहुंच गए थे क्रीज में। एक 115 पर 5। पिछली बार फिजियोनिश स्मैशर्स ने टर्फ ब्लास्टर्स के सामने बोरीवली में 116 बनाए थे और ऑल आउट हुए थे, उसके बनिस्बत अच्छा प्रदर्शन आज। और आज भी वही स्कोर है जो 9 जनवरी को फिजियोनिश स्मैशर्स ने टर्फ ब्लास्टर्स के सामने बनाया था, 116 5 विकेटों के नुकसान पर। फर्क सिर्फ इतना है कि बोरीवली में ऑल आउट हुए थे फिजियोनिश, आज उन्होंने 5 विकेट कम खोए हैं, लेकिन रन वही है। 14 वाइड के रन हैं। आकाश ध्रुवा 9 बॉल 11, भाविक 1 बॉल 1 नाबाद और यहां पर आसित शाह सबसे कामयाब गेंदबाज कहे जाएंगे, 4 ओवर 23 रन 3 विकेट। दूसरी ये स्कोर कार्ड, समीर पी शाह 16 बॉल 14, निर्मित शाह 6 बॉल 2, केयूर बिपिन जवेरी स्टंप आउट हुए 47 गेंदों में 35, मिनेश निरंजन शाह 27 गेंदों में 25। ये वो पार्टनरशिप थी केयूर मिनेश की जिसने अच्छा काम किया। बाकी के बल्लेबाजों ने नीचे कुछ रंग भरने की कोशिश की। 116 में 18 एक्स्ट्राज है, 14 वाइड है, 4 बाइज है। और इनिंग्स ब्रेक के लिए हमारे लौटते हुए अंपायर अमरीश नायक, प्रथमेश आंगले लौटेंगे कुछ देर बाद।
Welcome to Saurin Shah presents Patan Premier League Season 5, match number 25. Second innings about to commence as Turf Blasters are going to chase down the same score that they chased against PHYSIONISH Smashers on 9th of January at Kavirni Sports Arena, Borivali. The magic number 117. Last time they chased down the score and they won it with 6 wickets. Both the umpires are ready now. Umpire Ambrish Nayak and Prathamesh Angne. The opening batters are Suchit Jairaj Shah and Nirav Mahendra Shah. First over will be bowled by Kaushal Praveen Trivedi. We are thankful to all our sponsors and a special thanks to Saurin Bhai Shah, our title sponsor. Trophies are by Healthy Crunch by Monica Shah, wickets by Smith Engineering Company, maximum sixes by Patni Opticians, Team Player Award by Selfie Design, Man of the Series by MT Madan, medical sponsor Healing Pharma India Private Limited. Your Health is Our World. Jerseys and kits are sponsored by JP Hairpins, goodies by Vomeo, Love Freshly Served, hydrating sponsor White Divine, broadcasting partner Philco Trade Center Private Limited. Balls are sponsored by Allied Digital, IT managed responsibly. Boundaries by V Jewels, Jewels by Varsha Exports, PPL app and Man of the Match by SK. We serve since 1932. Catch of the Match by Trinity Entertainment. And special thanks to our hoarding courtesy KS Group, that's Kupchand Swarupchand family. Plays the call. 120 balls, 117 to get. Madhur Sadhvi, wicket keeper. Samir P. Shah at third man. Starting with wide. Nice acrobatic attempt by Madhur Sadhvi. Nirvan is in wideish gully. Bhavik Shah is at short point. Agam is at deep backward point. Keur Bipin Zaveri at short cover. That ball kept low. A big appeal there. Punit is at mid-on. Suchit drives and finds a fielder in Punit Shah. Last year we saw Punit fielding in the circle. Punit and Rashid did a great job for PHYSIONISH last year in point and gully. Another loud appeal. Kaushal Praveen Trivedi certainly has a formula to disturb Suchit Jairaj Shah. Oh, a beautiful takeoff. A perfect snorter in the channel and collected neatly by Madhur behind the stumps. Suchit Jairaj Shah is one batter who would want to go for his shots in the power play, and Kaushal Praveen through his straighter deliveries. And Suchit Jairaj Shah has survived a couple of appeals towards LBW. Yorker. That's KP for you. Lethal weapon in the bowling department. A utility player. This time wide. Ball deviated away from the channel and
good that Madhur collected it behind the stumps. Score 2 without any loss, chasing 117. Tough Blasters. This match will be at 16 points. Slower one, and this time punishing that delivery in the gap. There's a long run and chase, and this will be first V Jewels for Jewels by Varsha Sports. Beautiful square cut by the skipper. Score 6 at the end of first over, and that is the run rate at which they can easily chase down the score. But I think Turf Blasters, although they are positive in net run rate, they would want to win this match by keeping at least 3-4 overs so that they still jump in the net run rate, because they would also want to compete with MTM Riders on the NRR if they win. Bhavik Shah to bowl the next over. Skipper of PHYSIONISH Smashers now straight away bowling to Nirav Mahendra Shah. Nirav Mahendra Shah went wicketless, whereas Suchit Jairat Shah took 2 wickets. Lot of international flights arriving. We saw Air Asia a few moments ago. Go, Indigo, SpiceJet, Air India, Vistara. Lot of flights passing by this panoramic ground of Fatima High School. Wide ball, a loosener ball. Remember, there were 18 extra innings out of a total of 116. 111 required of 114. That ball deviated away from the right-hander. A big wide angle. Score 8. 109 required. Another wide. Bhavik is pitching it right, but not able to control the movement of the ball. He's trying to bowl somewhere near the off stick, and he's trying to take that ball away from the righty batter, and in the process he is not able to control. Score 9. This time bowling it on the leg side, and this can be costly for these smashers. Leg by. In double figures now, 10. Welcome all the viewers of YouTube who are watching this live, courtesy Philco Trade Center Private Limited, our broadcasting partner.
Very easy picking by Suchit Jairaj Shah, and he is not going to miss on those opportunities. These are low-hanging fruits that he would want to eat, and that was exquisite timing. Played square of the wicket, and this will be V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. With Ankit Sunil Shah being injured, we saw a change in the batting order as well, and hope things are fine with him. He recovers quickly and is available for the next match. Wide ball. 15 without loss. Keyur talking to a skipper, probably some inputs. This is on the leg side, and Madhur Salvi looks a busy man today, diving here and there like a goalkeeper of Arsenal Football Club. Six wides already. That means an over extra will be bowled. Score 17. Now only 100 required. Slapping that delivery. No need to run for that. Hot shot that is. And that is V Jewels 4. Jewels by Varsha Exports. Short and wide. And slapped it so well. Sweet sound for our ears. 21. That's high and handsome. You don't run for those. V Jewel 6. Jewels by Varsha Exports. Now that Bhavik is trying to avoid wide balls, he is bowling right under the bat. And Nirav Mahendra Shah played a rocket shot. A V Jewel 6. Jewels by Varsha Exports. 27. Well, not to forget, there is a maximum success award by Patni Opticians. End of second over, 27 runs. Nirvan will start from the far end. Kaushal Trivedi had bowled one over, and Nirvan being brought in attack. Nirvan has bowled a few good spells in this tournament. He is a youngster full of confidence, has a point to prove. PHYSIONISH Smashers has got fantastic bowling lineup. They've got Puneet Shah, they've got Agam, who is doing well. Kaushal Praveen Trivedi has been bowling well. Keyur Bipin Zaveri, who sealed the victory for them in the last match. And Nirvan. Bhavik Shah being other option.
27, 90 to win. Suchit this time goes on his back foot and plays towards a short cover. Dharmit the fielder, and there will be overthrow runs. A beautiful plane of Rwanda Air. Rwanda and Burundi are the two countries in Africa. Rwanda Air tossed it up and driven firmly. He will walk down the single. .30 without loss. Nirvan Shah bowling third over of the innings. Remember, the target is 117. This time, a flighted delivery played with straight bat. The off drive in V. Keur Bipin Zaveri at long off. .31. Played upishly up and above the gully region. Punit will try to chase it but will not be able to. I think he stopped it just in time and saved 3 valuable runs. Suchit Jairaj Shah was almost sure and certain that that will reach the fence, but good try by Punit Shah, saving 3 valuable runs. Nirvan is trying to give air to the deliveries. End of over number 3, 33. A healthy run rate right now. Punit Shah to start fresh over. Quick bowling changes by PHYSIONISH smashers. Kaushal, Bhavik, Nirvan, Punit. 4 overs by 4 different bowlers. Very rarely it happens in cricket that 4 overs are bowled by 4 different overs, and that too in the power play. Punit, whenever he takes wicket, I think PHYSIONISH smashers end up on winning side. We saw that in last match as well. That was pitching outside the leg, and umpire Prathamesh Angne has no hesitation in giving it not out. 33. Oh, that was swiped beautifully, and that will to the fans for 4. V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. Fabulous
And that ball traveled across the green carpet for 4. Turf blasters are blasting and blasting it really hard. Lower full toss and driven in the V. Kaushal Praveen Trivedi, the fielder. .38 runs. Wide ball, 39. That was a bad ball, ballooned in the air in the vacant region, and that should sprint to the fence for 4 again. Very easy picking. That was a juicy Rashogolla served, and very nicely skipper accumulated 4 runs. 43 without loss. V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. And a 4th over. Score is 43. The only good partnership that we saw in the first innings was between Minesh Niranjan Shah and Keru Bipin Zaveri. Whereas Top Blasters, living up to their reputation of heavy batting side, Nirav Mahindra Shah has settled into the shoes of Ankit Sunil Shah today, who is injured, and Nirvan to continue. Nudged it behind the square, Agam the fielder. 44. Steps forward and blasts that delivery towards the onside. Kaushal Praveen Trivedi stopping a boundary. .45 without loss. Nirav Mahindra Shah on 18 of 12. Suchit Jairat Shah on 17 of 15. Required run rate dropping down to 4.65. 72 required of 93. This time tapping it beautifully, but finds a fielder in Bhavik in the ring. The 30-yard circle also looks like a colorful necklace because there are various colors on the edge of the circle. You see blue, green, yellow, orange. Get a beautiful necklace view from the top.
The way we have Queen's Necklace drive. Now that was a shot in the slot and sent to the adjacent plot. V Jewels 6. Jewels by Varsha Exports. 50 up on the board.51 without loss after 5 overs. Let's look at the comparison of 5 overs. In the first innings, the score at the end of 5 overs, I think, was 24. And in the reply, they are 51. They lost 1 wicket in the first 5 overs, and there are no wickets lost. पुनीत शाह नया ओवर की शुरुआत करेंगे. आप देख रहे हैं सौरिन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5 मैच नंबर 25. इस बार उठा दिया है और एक आसान कैच वहां पर कौशल प्रवीण त्रिवेदी के हाथ में, और ये बड़ा विकेट. ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट कैच ऑफ द मैच लिया है कौशल प्रवीण त्रिवेदी ने, और स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट लिया है यहां पर पुनीत शाह ने. इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था. पावर प्ले का अंतिम ओवर था. सुचित जयराज शाह अपना संयम खो बैठे और अपना विकेट गंवाकर वापस लौटे, लेकिन एक अच्छी भागीदारी 51 रनों की पहले विकेट के लिए, और नए बल्लेबाज के रूप में उतरते हुए स्मिथ हितेन शाह. सुचित ने आउट होने से पहले 17 रन बनाए. पुनीत शाह का लय में आना अच्छी बात है. पिछले मैच से हमने देखा पुनीत बहुत अच्छी सधी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं. स्मिथ हितेन शाह पिछले रविवार की रात उनके नाम रही थी जब उन्होंने टर्फ ब्लास्टर्स को भव्य विजय दिलाई थी एसपीएस सुपरस्टार्स के सामने. 74 रनों की नाबाद पारी खेली थी, और स्मिथ हितेन शाह का क्रीज पर रुकना बहुत जरूरी रहेगा आज. एलबीडब्ल्यू की अपील. खराब गेंद थी और इस बार गैप से निकाल दिया. स्मिथ के लिए यह बहुत आसान था. शानदार वी ज्वेल्स चौका. ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स. पावर प्ले का ओवर होने की वजह से स्मिथ को अच्छी तरह पता था. लोअर फुल टॉस और बहुत शालीन अंदाज में उस चौके को लगाया. बल्ले की जड़ को लगती हुई गेंद. 4 रनों के लिए.
वी ज्वेल्स चौका, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स 55 for 1। 117 बनाने हैं जिसमें 55 बने हैं। बासठ रन और चाहिए। 62 स्टिल रिक्वायर्ड टू विन द मैच। इस बार पुनीत ने गेंद को फ्लाइट दिया था, बल्ला और पैड दोनों को साथ में रखा। कई बार आपने टेस्ट मैचेस में देखा होगा, प्ले एज क्लोज टू योर बॉडी एज पॉसिबल, उस तरह का बचावात्मक क्रिकेट वहां पर स्मिथ हितेन द्वारा उस गेंद पर। गेंद की लाइन में आकर ड्राइव किया और वहां पर सिंगल पूरा करते हुए स्मिथ हितेन शाह। छप्पन रन 1 विकेट के नुकसान पर। टर्फ ब्लास्टर्स, टर्फ के ऊपर जब घोड़े दौड़ते हैं तो उसको देखने का मजा कुछ और होता है। आखिरी वक्त पर अपने स्ट्रोक को चेक किया था नीरव महेंद्र शाह ने। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त हुए, 56 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। वाइड के 9 रन आए हैं। एक और बॉलिंग चेंज, केयूर बिपिन गेंदबाजी में आते हुए और सामना करेंगे स्मिथ हितेन शाह। ये बहुत खतरनाक कॉन्टेस्ट रहेगा क्योंकि स्मिथ हितेन शाह के पास एक और जहां शातिर दिमाग है, वहीं पर केयूर बिपिन जवेरी ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर वक्त बैटर के दिमाग के ऊपर काम करता है। फ्लाइटेड बॉल टप्पा खाकर बाहर मुड़ी। मधुर साळवी ने स्टंप से चिपक कर वहां उस गेंद को अपने दस्तानों में कैद किया। 56 1 विकेट पर। बहुत ही लाजवाब गेंद अपील की जा रही है यहां पर केयूर बिपिन जवेरी। उनकी गेंद स्मिथ हितेन शाह के बल्ले को जागते रहो का आदेश देती हुई मधुर के दस्तानों में कैद हुई। 2 लाजवाब गेंदें केयूर बिपिन जवेरी द्वारा। बहुत ही टाइट लाइन पर बॉलिंग करते हुए धर्मित ने गेंद को वहां पर रोका था सर्कल के अंदर। खराब गेंद थी और उसको हुक कर दिया। 3 अच्छी गेंदों के बाद एक खराब गेंद और स्मिथ हितेन शाह ने उसे हुक कर दिया 4 रन के लिए। वी ज्वेल्स 4, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। अफलातुन टाइमिंग। स्मिथ शाह को लेग स्टंप के बाहर अगर आप गेंद करेंगे तो आंखों पर रुमाल बांधकर भी वो बॉल को मैदान के बाहर भेज देगा। 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 60 for 1। अब तेज तर्रार तीखा तेवर केयूर बिपिन जवेरी का। केयूर बिपिन जवेरी भी अपनी गेंदों में परिवर्तन ला रहे हैं, गेंद की रफ्तार में भी और दिशा में भी। धीमी गेंद थी इस बार और एक मखमली स्पर्श और गेंद मैदान के बाहर। 4 रन। वी ज्वेल्स चौका, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। स्मिथ हितेन शाह ने एसपीएस सुपरस्टार्स के सामने थर्ड मैन के ऊपर इतने रन बनाए थे कि थर्ड मैन की फील्डिंग पोजीशन को स्मिथ हितेन शाह का नाम दिया जाए, ऐसी स्थिति आ गई थी उस दिन। लेट कट लगाते 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 स्मिथ हितेन शाह अब 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
लेकिन क्या मैच हुआ था एसपीएस सुपरस्टार्स और टफ ब्लास्टर्स का। एक तरफ क्रिश वोरा और एक तरफ स्मिथ हितेन शाह। ऐसा लगा मानो ये मैच खत्म ही ना हो, इस तरह चल रहा था दोनों टीमों के बीच में। हाई स्कोरिंग गेम। अब 78 गेंदों में 53 रन चाहिए, 53 रिक्वायर्ड ऑफ 78। स्मिथ हितेन शाह 10 बॉल 13, नीरव महेंद्र शाह उनका अच्छा साथ दे रहे हैं। सोलह बॉल में 24 पर खेल रहे हैं नीरव महेंद्र शाह। एक और बेहतर बॉल पुनीत की। सुबह से लेकर शाम तक पुनीत इस तरह के 20-22 ओवर कर सकते हैं। बहुत अच्छा नियंत्रण है गेंद के टप्पे के ऊपर। गेंद का टप्पा, गेंद की दिशा और गेंद की गति को अपना गुलाम बना रखता है पुनीत शाह। (64 for the loss of 1 wicket). इस बार बॉलर के सर के ऊपर से बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला था कौशल प्रवीण त्रिवेदी। दौड़ कर आए लॉन्ग ऑफ से और वो चौके को बचाया। कौशल प्रवीण त्रिवेदी ने भी आज 3 के आसपास चौके बचाए हैं। 65 for 1। फ्लाइटेड बॉल लोअर फुल टॉस थी और ये लगा बेहतरीन चौका। बिल्कुल मखमली और मुलायमी वी ज्वेल्स चौका। ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया था स्मिथ हितेन शाह ने। पाटन का लिटिल मास्टर, पाटन का लिटिल मास्टर जिसकी टीम है टर्फ ब्लास्टर्स। 69 for 1। इस बार शानदार गेंद रही और 8 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 69 for 1। करंट रन रेट 8.63। केयूर बिपिन जवेरी के नेवर की पहली गेंद धीमे से धकेला है विकेटों के पीछे निर्वाण के पास। गली में निर्वाण ने रोका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70, 1 विकेट के नुकसान पर। 47 रन और काम आसान रहेगा।
9 जनवरी को ये दो टीमों के बीच में जो मुकाबला हुआ था उसमें भी 117 रन का टारगेट था। इस बार केयूर ने ललचाया था, गेंद को हवा में रखते हुए स्पीड बाहर बुलाया था ड्राइव करने के लिए और डॉट बॉल। 70 for 1, 47 रिक्वायर्ड टू विन द मैच। रिक्वायर्ड रन रेट अब काफी नीचे आता हुआ 3.97, 47 रिक्वायर्ड ऑफ 70। बिल्कुल इसी तरह सिंगल्स लेते रहना होगा। पहले विकेट के लिए आज हमने देखा 51 रन की भागीदारी सुचित जयराज शाह और नीरव महेंद्र शाह के बीच में। सुचित 17 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद स्मिथ हितेन शाह जुड़े और देखते ही देखते अब दूसरे विकेट के लिए 20 रनों की भागीदारी अब तक हो चुकी है। पटक कर किया था और वहां पर कैच छूटा। डिफिकल्ट चांस था पुनीत शाह के लिए, डाइव किया और पुनीत क्योंकि लेफ्टी खिलाड़ी है थोड़ा मुश्किल था, लेकिन रन जरूर। केयूर बिपिन जवेरी की बॉलिंग एक्शन अगर आप देखें बहुत ही स्मूथ रिलीज है और गेंद जब तक उनके कान के पास नहीं आती पता नहीं चलने देते कहां पर करेंगे गेंद को। इस बार थोड़ी तेज बॉल थी और गैप में खेला है, वहां पर 1 को 2 में तब्दील कर लेंगे। स्मिथ हितेन शाह बहुत अच्छे रनर भी है विकेटों के बीच में। नौवां ओवर समाप्त होता हुआ 74 for 1 और ये ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल होगा। रिक्वायर्ड रन रेट 3.91। कौशल प्रवीण त्रिवेदी 10वां ओवर प्रारंभ करेंगे। आप देख रहे हैं सौरीन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5 मैच नंबर 25 फातिमा हाई स्कूल विद्या विहार घाटकोपर पश्चिम मुंबई में ये प्रतियोगिता की जा रही है। गति परिवर्तन और बॉल काफी समय हवा में रही थी, लेकिन भावी के बाजू से दूसरी टप्पा खाया और 1 रन। आगम ने बैकअप किया, गेंद की गति ने चकमा दिया था वहां पर महेंद्र शाह को। फाइव for 1 और एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर चलता हुआ जहां हर उम्र के बच्चों को आप सीखने बहुत लाजवाब मूवमेंट गेंद की, इस तरह के लेग कटर्स जिस तरह आज हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट बिजी है, वैसे हमारे स्कोरर भी आज बिजी है। इस बार उठा दिया है और ये लगा गगनचुंबी छक्का। पॉकेट रॉकेट वी ज्वेल्स 6 ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। स्मिथ हितेन शाह 81 पर 1। अब देखिए बहुत अच्छी एल्बो पोजीशन स्मिथ शाह की, यह खास बात है। ये फील्डिंग करता है तो स्पीड ब्रेकर बन जाता है, बैटिंग करता है तो लिफ्ट बन जाता है। 81 for 1।
ओवर समाप्त होता हुआ 10वां, 81 रन एक विकेट के नुकसान पर। और आइए लेते हैं जलपान का अल्पविराम। Special thanks to all the owners of the teams. Kusum Warriors owned by Sharad Bhai Shah, PHYSIONISH Smashers by Bhavik Shah, Nirvan Shah and Minesh Niranjan Shah. Now that was hammered but couldn't quite clear the distance. A single there. MTM Riders owned by Kamlesh Bhai and Hemal Bhai. SPS Superstars owned by Sandeep Bhai. SK Strikers owned by Ketan Shah, Gaurav Shah, and Turf Blasters owned by Suchit Jairaj Shah. Thank you all the 6 owners. Great work by organizing committee led by Tushar Bhai Shah, Bhavesh Bhai Shah, Nishit Shah, Asit Shah, Vismay Choksi, Harshal Shah, Puneet Shah, Kavish Javedi, Sahil Shah and Viren Bhai Shah. Pitch delivery, lofted cover drive, and Smith will get a single. $85 for 1 now, 32 required of 56. Smith Hiten Shah on 27, Nirav Mahendra Shah on 31.
Oh, that was a lucky escape, and this will be 4 runs. We Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. Excitement building up here. Our Blasters are marching ahead. The black horse of Turf Blasters running and running real quickly now, sprinting towards the finish line. Oh, excellent delivery to end the over. 89 for 1 after 11. So a private jet of Reliance Air flying above this ground. Keur Bipin Zaveri now bowling from the commentary box end. A change of end for him. Let's see how he negotiates with Smriti Tensha on the pitch. Punched that delivery, went deep into the crease, played close to the stumps, and a single. Smriti Tensha is a useful cricketer to have in your team. A true team player, a thorough gentleman, and he has that will to learn from the seniors. Emerging player of the tournament last year, Smriti Tensha. Oh, that was a quicker delivery. Nirav Mahendra Shah just escaped. Goes for it and smothered past the cow corner for V Jewels 6. Jewels by Varsha Exports. .96 for 1. Only 21 required. What a confident performance today by Turf Blasters. The moment they won against SPS Superstars. Well, I'll tell you, this transition, this transformation happened when they defeated Kusum Warriors. Ever since that, Turf Blasters have never looked back. They are looking confident as ever. That super over in Surat has also added fuel to the fire. And now every Turf Blaster has a fire under their belly. Straight drive, and this will be 4. Exquisite timing. Straight down the ground, and V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports, 100 up on the board. $17 to win. Nirav Mahendra Shah on 45 of 31. Smriti Tensha on 28 of 24. $12 overs, 100 for 1. 17 required of 48. This will be an early finish today. Nirav Mahendra Shah enjoying the conditions, enjoying the batting, and winner has got some liquid for them.
and along with him young Vihan also enjoying Turf Blasters success. You know, I like my things personalized. Here's how I do it. It's that easy. Only a miracle can save PHYSIONISH Smashers. 17 record of 48 balls. Fantastic hard hitting by Nirav Mahendra Shah and Smith Hiten Shah. Very methodical. A nice leg break to start the over by Agam. Ballooned in the air. This will not be caught, and a 50 runs partnership between these two for the second wicket. When Suchit Jairaj Shah got out, the score was 51, and a 50 added by these two for the second wicket. And this is the main difference between the two teams. While we saw just one 50 plus partnership between Keyur Bipin Zaveri and Minesh Niranjan Shah, we have seen two strong partnerships. Nirav Mahendra Shah going in for two. Nice placement. Lot of ground covered by Bhavik Shah running to his left. (103 for 1). Again ballooned in the air, trying to play an inside out lofted cover drive. They get a single. Well, MTM riders, watch out. Turf Blasters are coming near to you. (104 for 1). Tossed it up, and look at that shot. That is clobbered. The rocket hit by the pocket rocket. V Jewels 6. Jewels by Varsha Exports. I remember Tony Gregg giving this name of a little packet of dynamite to Romesh Kalu Vitarana in 1996 World Cup, when Jayasuriya and Romesh Kalu Vitarana, he used to do the pinch hitting. 110 for 1. Only 7 to win. So welcome to Vinesh Bhai Shah, our committee member. So another bowling change, and now Viral Shah being given an opportunity to bowl. Viral Rajesh Shah represents Kusum Warriors, and he's Viral Shah representing PHYSIONISH Smashers.
Wide ball. 111 for 1. So that's a Nelson score. Hope umpire David Shepherd, if he is watching this from the heavens, he would jump even there as well. It's a single Nelson. Nirav Mahendra Shah just too short of his half century, and this will be very well batted half century. Nirav Mahendra Shah, known for his bowling, already has a maiden against his name this year, and a half century would certainly be a morale booster. As we go towards the climax of the tournament, you would want your 6, 7, 8 batters to be in touch. He's a bowling all-rounder who can bat. Nirav Mahendra Shah came in as an opener today. Played uppishly, and this will be an easy catch. Oh, he has dropped it. The way catches are dropped by both the teams, it seems they look like colonial cousins. You drop, we drop. We drop, you drop. Very risky. Smith Hiten Shah this time goes behind the square for a single. $113 for 1, and Nirav Mahendra Shah just one shot of his 50. Looking towards the sky, probably thanking God. Just one shot. And that's a half century for Nirav Mahendra Shah. Jersey number 14. Yeah, that's the number Gautam Gambhir used to wear. Came in as an opener and worked as a stone waller, but also had some excellent batting. Oh, what a shot that was, but stopped brilliantly by Keyur Bipin Zaveri. Only 3 to win now of remaining 6 overs. And this will certainly give edge on the net run rate as well. And also 4 valuable points. They will be at 16 points where MTM riders are. At 12 points, and they would ask him tomorrow when they come out to be at 16. But then chances of qualifying with 16 points again is a question. SK Strikers at 24, Kusum at 20, MTM Riders at 16. Turf Blasters would reach 16. PHYSIONISH and SPS are at 12 currently. This is match number 9 out of the round robin stage for both the teams. Round robin is nothing but when you play against all the remaining teams, it's called round robin. In contrast to league stages where you play against other teams in your group. 1992 World Cup was the first World Cup where we saw round robin cricket in Australia and New Zealand. This time playing uppishly, another catch dropped, a single. And this is a big win.
Same score they chased down on 9th of January at Borivali against the same team. But there they won by 6 wickets. Today they are going to win by 9 wickets. Yeah, that is it. That is the confirmation. The writing is on the wall, and that's a V Jewels 4. Jewels by Varsha Exports. Congratulations, Suchit Jairaj Shah, Varsha Shah, Mamta Shah, Vihan Shah, and entire Shah family. Clinical performance and hard luck PHYSIONISH smashers.
Good afternoon, friends, and welcome to the post-match presentation ceremony of match number 25 under Saurin Shah presents Patan Premier League Season 5. Well, I would like to call upon the presentation party, our committee member Vinesh Bhai Shah to join me, please. I also request Sri Jairaj Bhai Shah to join us, please. I also request Mamta Shah, our hydrating sponsor from Vidimind, and Shrimati. I also Entertainment, our catch of the match sponsor. Can we have Vinesh Bhai Shah join me, please? Welcome Varsha Jairaj Shah. Welcome Jairaj Bhai Shah. Welcome Vinesh Bhai Shah. Welcome all the guests for the post-match presentation ceremony. We start with the first award, that is Catch of the Match Award, which is sponsored by Trinity Entertainment. And I shall request Vinesh Bhai Shah, our committee member, to give away Catch of the Match Award to Kaushal Praveen Trivedi. Kaushal Trivedi is Catch of the Match. Congratulations, Kaushal. And thank you so much, Trinity Entertainment, Catch of the Match sponsorship. Thank you so much. Maximum Success Award, which is sponsored by Patni Opticians, and I shall request Mr. Jairaj Shah to give away this award. And Maximum Success Award of Patni Opticians goes to Nirav Mahendra Shah. So, a trophy sponsored by Healthy Crunch by Monica Shah, and a gift hamper from Patni Opticians, Mr. Amit Patni. Thank you. Now I shall request Shrimati Varsha Shah to give away Team Player of the Match Award, which is sponsored by Selfie Design. We are thankful to Sahil Sharat Shah for sponsoring this award. And this award goes to Keyur Bipin Zaveri. Trophy by Healthy Crunch by Monica Shah, and a gift hamper by Selfie Design and McMarise. Now I shall request Vismay Choksi, who are our sponsors for Catch of the Match Award, and he's also a player of MTM Riders. He's also the committee member. He's wearing many hats. And Man of the Match Award, sponsored by SKV Surf since 1932, goes to Asit Shah for 3 wickets. Trophy sponsored by Healthy Crunch by Monica Shah, and a cricket bat and a batting gloves. So these are the day moments. Yeah, great. Asit Bhai, if you could join me, please. Asit Bhai, આપણે જ્યારે ઉંમરના એક 50મા વર્ષના પડાવ તરફ આવ્યા હોઈએ અને જ્યારે ક્રિકેટ રમતા હોઈએ ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુ આપણા પાસે એક્સપેક્ટ કરવામાં આવે. અને ચીતલ ભાભી ઓલા દિવસે મને કહેતા હતા કે અમારી એક જ ટીમ એવી છે જેમાં 40+ વાળા ખેલાડીઓ વધારે છે, પરંતુ એને કહેવાય ને કે ઉંમર ભલે 40 ઉપરની છે પણ અંદર જે જુનૂન ને જોશ છે એ 16 વર્ષના યુવાન જેવું છે. થેન્ક્સ ટુ સુચિતભાઈ કે અમને લોકોને આ ઉંમરમાં પણ લે છે અને રમવા માટે ચાન્સ આપે છે અમને લોકોને બધાને.
અને અમારી સાચી કહીએ તો અમારી ટીમને ચાઇના કિટ કહેવાય છે. તો થેન્ક યુ ફોર ઓલ ધ માય ટીમ પ્લેયર્સ ફોર ગીવ ધ સપોર્ટ ફોર મી. આસિતભાઈ, આજે નીરવ મહેન્દ્ર શાહ એઝ એન ઓપનિંગ બેટર આવ્યો કારણ કે અંકિત સુનિલ શાહને વાગ્યું હતું. અને આ રીતે તમને લાગે છે કે ટુર્નામેન્ટમાં આ બહુ જરૂરી છે, જ્યારે હવે આપણે છેલ્લા સ્ટેજ ઉપર આવી રહ્યા છે ત્યારે તમારી ટીમના લગભગ બધા જ ખેલાડીઓ હવે ક્લિક થઈ રહ્યા છે? બધામાં અમારા 11 12 પ્લેયર જે રમે છે એ લોકોના બધામાં સ્ટેમિના છે રમવાની છેલ્લે પ્લેયર સુધી. તો હોપ બધા આ વખતે ક્લિક થઈ રહ્યા છે, તો અમારા માટે સારું છે આ મેચ માટે કે અમે લોકો ફાઇનલ સુધી પહોંચી શકીએ. અને હવે ફક્ત હજુ એક મેચ જીતવાની છે અને તમે ક્વોલિફાય થઈ જશો. તો આજે હજુ પણ તમને એવું લાગે છે કોઈ એક ડિપાર્ટમેન્ટ જ્યાં થોડી મહેનત હજુ કરવી પડશે? બટ એઝ પર બધાને ખબર છે કે ફિલ્ડિંગ વાઇઝ અમારે બહુ ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જરૂર છે. તો લેટ્સ જોઈએ છે કે અમે લોકો આ કાલની મેચમાં શું થાય છે, તો નેક્સ્ટ વીક એના પર અમે વર્ક કરશું. થેન્ક યુ સો મચ આસિતભાઈ એન્ડ વિશ યુ ગુડ લક ફોર ધ રિમેનિંગ મેચેસ. કેન વી હેવ ભાવિક શાહ જોઈન મી પ્લીઝ? Bhavik, good afternoon. Of course, the match didn't went well the way you wanted. Same score that your team posted at Borivali, same score here. But of course, you lost 5 less wickets. How do you summarize your today's performance in all the 3 departments? It was very disappointing. We could always do much better than what we did today. We'll look into it. We'll improve when we come next. Batting, bowling, fielding, all could have improved. Yeah, that's correct. You still have a chance because you have a game coming up tomorrow and you can end up at 16. And of course, there are a lot of permutation combinations of ifs and buts. But then again, today Minesh played well. I think the batting of Keyur Bipin Zaveri was also clicking. But I think in fielding department also your team didn't do well. Normally your team would do well in fielding department, but that is also a concern today. Yes, it was there, but we'll look into it. We'll come back stronger than this. Well, that's where the PHYSIONISH Smashers are a team with a difference. You guys got to smash and smash it hard tomorrow. Congratulations and keep playing. Suchit, if you could join me, please. What a lovely occasion. I mean, your parents are here. The same old under 15 days, and now when you are 40 plus at the same time, the same enthusiasm of your parents, your brother is here, your wife is here, your son is here, and entire Tough Blasters are here. I think that Kusum Warriors match, and especially that super over, has done a 360-degree turnaround in your team. Well, the super over match from Surat has actually done a 720-degree turn in our team. The players were really disheartened after the match, and they said that they are going to put in everything. And as I told you that we are now clicking in all the departments. Our batting is coming well, our bowling is going good. The fielding is a little bit of question mark, but I hope we do well in that department too. As far as my parents are concerned, they've always been real enthusiasts in cricket. They've been supporting us ever since we were young, and I wish to do that with Vihan also. How is the injury of Ankit Sunil Shah? How do you see that? I don't think he's injured, but I don't know if there is an injury, it doesn't matter. He has to play. That's it. So wish you good luck, Suchit, and see you tomorrow for your last league match. So dear friends, very confident looking captain cum owner Suchit Jairaj Shah. So we come to the end of presentation ceremony. We have a toss coming up in short while from now between SPS Superstars and MTM Riders, and that match will commence in a short while from now. Till then, enjoy your lunch and come back real quick. Thank you. मातृभूमि तारी कृपा थी श्रद्धा न स्वर गूंजाया पूर्वावस्था तारा स्मरणों सूर बनी ने छलकाया मातृभूमि तारी कृपा थी श्रद्धा न स्वर गूंजाया पूर्वावस्था तारा स्मरणों सूर बनी ने छलकाया
ટન 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 ટનાટન પાટણ, ગરવી ગુજરાતનું આ પાટણ. મારું ગૌરવ વતન મારું પાટણ, ટન 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 ટનાટન પાટણ. ધરતી આ ગુજરાતની મારા દેશનું અભિમાન છે. ધરતી આ ગુજરાતની મારા દેશનું અભિમાન છે. રાણીની આ વાવડી મારા દેશનું સન્માન છે. રાણીની આ વાવડી મારા દેશનું સન્માન છે. આ વસુંધરાની યાનથી ઉઠે છે મસ્તક માનથી, સૌ કોઈ બોલો શાનથી. હું પત્ની છું, હું પાટણનો પત્ની છું, પત્ની છું. નગરી રાજા સિદ્ધરાજની અણહિલપુર એનું નામ છે. નગરી રાજા સિદ્ધરાજની અણહિલપુર એનું નામ છે. પંચાસરાને શામળાજીમાં તીર્થોનું આ ધામ છે. પંચાસરાની શામળાજીમાં તીર્થોનું આ ધામ છે. આ વસુંધરાની યાનથી ઉઠે છે મસ્તક માનથી, સૌ કોઈ બોલો શાનથી. હું પત્ની છું, પત્ની છું, હું પાટણનો પત્ની છું, હું પત્ની છું, પત્ની છું. હેમચંદ્રાચાર્ય જ્ઞાનપીઠ જૈન ગ્રંથોનો ભંડાર છે. શંકરાચાર્ય જ્ઞાનપીઠ જૈન ગ્રંથોનો ભંડાર છે. મા સરસ્વતીનો વાસ અહીં આ વિદ્યાધરોનો દ્વાર છે. મા સરસ્વતીનો વાસ અહીં આ વિદ્યાધરોનો દ્વાર છે. આ વસુંધરાની યાનથી ઉઠે છે મસ્તક માનથી, સૌ કોઈ બોલો શાનથી. પત્ની છું,